ओके स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अबाउट टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल voids. So as we already have discussed it, that in case of solids during close packing of particles in unit cells, we have seen that though there is close packing of particles, but still some empty space remains there. Such empty spaces are known as voids, and there are two types of voids. First is tetrahedral void. How it is formed? A tetrahedral void is formed when there are three particles in a particular layer, and above these three particles there is another particle at the center, means the space between three lower layer particles. So means to say here that four spheres are surrounding this small empty space between them. It is called tetrahedral void. So a tetrahedral void is present between four particles at the center. What is octahedral void? A octahedral void, it is made by six particles, three particles of lower layer which have a triangular space between them. That triangular space here we can say is in this form with its apex in a upward direction, and above this layer three particles of another layer, that is second layer, are placed in such a way that they also surround a triangular space between them. So three particles of lower layer like this and three particles of upper layer like this. So these two triangular spaces which have opposite apex, एक की डायरेक्शन ऊपर को है, एक की डायरेक्शन नीचे को, these two empty spaces जो triangular shape में है, they lie one above other, and the empty space between these is called octahedral void. So octahedral void, if we try to make its shape, it will be like this. Three particles of one layer and three particles of other layer. Total six particles are surrounding this octahedral void. Now what we have to do in this topic, that is about voids, first is to find the location of these voids in unit cell. Second is to find the size of relationship of size of tetrahedral and octahedral voids with the radius of particle. Third is to find the number of voids with respect to the number of particles in a crystal or in a unit cell. So first, locating these tetrahedral and octahedral voids. So for that we have to make a simple cubic unit cell like this. Now when we are talking about close packing, we will say that closest packing is in case of face centered cubic unit cell where particles are present on 8 corners and also at 6 phases. So first, second, third, fourth, fifth and sixth. So three phase particles make a triangle and this corner is placed on this. Here also three particles you can see and one corner lying on this corner also. From all sides a corner particle is in direct contact with
three its adjacent faces, face center particles. So upper one is corner particle here, and these three are the face center particles. So it gives us a tetrahedral void. Now what will be then location? If we see about this location, this is the position of a tetrahedral void, because three face center particles are making triangular base and corner is placed above this. So between these four particles tetrahedral void will be here. And what is this location called? It is on the body diagonal. Similarly, one board on this side, one particle corner and three face center particle. All the 8 corner particles having just in front of them a void, that is tetrahedral void, formed by these 4 particles, one corner and 3 face center particles. So what is location? The tetrahedral voids are located on body diagonals. How many body diagonals are there? So 8 corners. Joining these 8 corners, oppositely present 8 corners, we will get 4 body diagonals. So assume this is one of them. So it is present here at a distance of 1/4 of the body diagonal from the corner. 1/4 पर एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पे, एक बॉडी डायगोनल पर 2. So 4 body diagonals, 2 on each. In total 8 tetrahedral voids will be there on each body diagonal, just in front of the 8 corner particles. So what is the location of tetrahedral voids? Tetrahedral voids are located on body diagonals at 1/4 distance from the corner. So once again, बॉडी डायगोनल के कॉर्नर्स जो पार्टिकल है उससे 1/4 डिस्टेंस पर होंगे. 4 बॉडी डायगोनल हैं. टोटल 8 आपके पास टेट्राहेड्रल वॉइड्स एक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में प्रेजेंट होंगी. फेस सेंटर में इसलिए कह रहा हूँ कि हमने यहाँ पे फेस सेंटर वाले यूनिट सेल को यूज़ किया है. सेकंड, आपके पास लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड. सो अगेन octahedral void is made up of, it is surrounded by 6 particles. 3 आपको एक लेयर में चाहिए जिनके बीच एक ट्रायंगुलर स्पेस बने. इसके ऊपर आपको सेकंड लेयर के पार्टिकल चाहिए 3, उनके बीच भी एक आपके पास ऐसे ही ट्रायंगुलर स्पेस बन जाएगा. दोनों ट्रायंगुलर स्पेसेस जो होंगे एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे. उनके बीच का जो ये एम्प्टी स्पेस होगा that is a octahedral void. So again, in a face centered cubic unit cell we will see how these particles, these voids are formed. So first we have this cubical unit cell, 8 particles on the 8 corners, 1 on each, and then we have 6 particles on the face centers. Now here 3 adjacent faces we can take, downward, side one, and you can consider this front one. So these 3 face center particles are making a triangular arrangement. Similarly, opposite to this, upper one, behind one, and right side one, these are also making a triangular. So we get here 6 face center particle. 3 are in arrangement of a triangle, other 3 are also in arrangement of triangle. So one body
octahedral void will be present between this, that will be exactly at the body center. तो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल. ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है दिस इज प्रेजेंट इनसाइड द यूनिट सेल. ये सेंटर में है, किसी से भी शेयर नहीं हो रही है, टोटली इसी को बिलोंग कर रही है बिकॉज बॉडी सेंटर में है. अलॉन्ग विद दिस वी हैव more octahedral voids, but these are located at the edge centers. Now what are edge center? Line joining these two corners is called an edge. और इस edge के center पर आपके पास जो है octahedral void बनता है. हमारे पास टोटल 12 edges होते हैं. तो इन 12 edges के ऊपर आपके पास 12 octahedral voids प्रेजेंट होंगी. बट अगेन यहाँ पर आपके पास 3 आप एडजेसेंट कॉर्नर्स को ले सकते हैं और इनके 3 एडजेसेंट दूसरे यूनिट सेल की फेसेस होंगी. तो 3 अलग अलग यूनिट्स और उनके फेस सेंटर्स. तो ये 3 अलग अलग यूनिट के फेस सेंटर और इसके 3 एडजेसेंट कॉर्नर, टोटल ये 6 पार्टिकल्स के बीच का स्पेस जो आता है दैट इज ऑन द ऑक्टाहेड्रल वॉइड. तो एक जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर पर बन रहा है, एक पर्टिकुलर यूनिट की कंट्रीब्यूशन नहीं है, टोटल 4 कंट्रीब्यूट करते हैं. एडजेसेंट 3 यूनिट सेल के फेस सेंटर और इनके 3 कॉर्नर सेंटर. तो कहने का मतलब यहाँ पर है जो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है इट इज शेयर्ड बाय 4 एडजेसेंट यूनिट सेल. तो एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो सिर्फ 1/4 है. सो 12 आपके पास टोटल एडजेसेंटर थे, उनके ऊपर एक एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, बट एक यूनिट सेल को उसकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/4 है. तो एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन क्या होगी टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड की 12 इंटू 1/4 दैट इज 3. सो टोटल 1 जो बॉडी सेंटर में था वो एग्जैक्टली इसी को बिलोंग कर रहा है, वो किसी से शेयर नहीं हो रहा है. और ये 3 जो हैं ये जो 12 बने थे ये शेयर होने की वजह से टोटल कंट्रीब्यूशन 3 रहती है. नेट नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन फेस सेंटर्ड इज ओनली 4. नाउ सो नेक्स्ट इज दी आपके पास नंबर ऑफ वॉइड पहले डिस्कस कर लेते हैं. यहाँ पर हमने अभी देखा कि फेस सेंटर्ड पार्टिकल जो आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल है, ए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हैज़ इन टोटल 4 पार्टिकल्स. हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था ये कि 8 कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन 8 इंटू 1/8 दैट इज़ 1 पार्टिकल. और जो आपके पास 6 फेसेस हैं उनकी कंट्रीब्यूशन हाफ ऑफ ईच 6 इंटू 1.5 टोटल पार्टिकल आते हैं 3 1 + 3 4. सो इफ वी टेक इट एज n, तो फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए n नंबर ऑफ पार्टिकल दैट इज 4 नंबर ऑफ पार्टिकल बिलोंग करता है. तो उसमें आपके पास नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितना आया दैट इज इक्वल टू 8 means 2 times of n. and number of octahedral void कितना आया हमारे पास 4 that is it is equal to n. so in any unit cell चाहे वो simple है, face centered है, body centered है, if we say that n is the number of particles belonging to a particular unit cell, then in that unit cell the number of tetrahedral voids will be twice of it and the number of octahedral void will be equal to same that is the n. so this also you have to remember. इसके ऊपर बेस्ड आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं कि हमें फार्मूला ड्राइव करना है किसी सॉलिड का फ्रॉम द नंबर ऑफ occupied tetrahedral and octahedral voids. Third part was the size of octahedral voids and tetrahedral voids. Now empty space का जो साइज है डायरेक्टली जो है प्रेजेंट होता है. जो void का साइज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द साइज ऑफ पार्टिकल्स.
आप इजीली भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमारे पास क्रिकेट बॉल्स हैं, उनको आपने इकट्ठे पैक कर दिया, उनके बीच एम्प्टी स्पेस लार्ज होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आपने स्मॉल मार्बल्स को इकट्ठे पैक किया है तो उनके बीच का स्पेस जो होता है कंपैरेटिवली वो स्मॉलर होगा। सो ये रिलेशनशिप की आपकी डेरिवेशन भी है रेफरेंस बुक्स में, बट सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट वो नहीं है डेरिवेशन, बट रिलेशनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो इफ़ वी टेक capital R as the radius of particle in unit cell and R is the radius of void, then the relationship that can be derived is that the radius of tetrahedral void जिसे हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट इज़ इक्वल टू 0.225 r। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, जो पार्टिकल है उसका रेडियस। हमें दोनों में अगर आपको टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस दिया है तो इस रिलेशन से आप r निकाल सकते हैं, और अगर आपको रेडियस पार्टिकल का दिया है तो इस रिलेशन को यूज़ करके ही आप टेट्राहेड्रल वॉइड का साइज निकाल सकते हैं। एंड रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड दैट इज इक्वल टू 0.414 ऑफ r। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें सो वी कैन इजीली से टेट्राहेड्रल वॉइड स्मॉलर होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड लार्जर होता है। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं जिसमें आपको जनरली आयनिक सॉलिड्स में, तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन केस ऑफ आयनिक सॉलिड्स हमारे पास कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं। तो जनरली एनायंस आर लार्जर इन साइज, they are present at main positions और locations in the unit cell, that is main position क्या हुई आपकी, कॉर्नर है, बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर है, एट्सेट्रा। एंड जो कैटायन होता है वो हमेशा स्मॉलर लेते हैं हम इसमें, जब कैटायन स्मॉलर है तो मेन पोजीशन पर ऑक्युपाई ना करके वो पोजीशन ऑक्युपाई करता है टेट्राहेड्रल वॉइड या ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। अब कोई कैटायन ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होगा या टेट्राहेड्रल वॉइड में, वो डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है। अगर उसका साइज़ टेट्राहेड्रल वॉइड के कंपैरिजन में आता है तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होगा, और अगर उसका साइज़ लार्जर है थोड़ा टेट्राहेड्रल वॉइड से तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में पोजीशन ऑक्युपाई ना करके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में पोजीशन को ऑक्युपाई करता है। तो इससे रिलेटेड भी आपको न्यूमेरिकल आते हैं कि आपको दे देता है x इज़ द रेडियस ऑफ कैटायन, यू हैव टू कैलकुलेट वेदर इट विल बी इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड और इट विल बी इन टेट्राहेड्रल वॉइड। थैंक यू।